I just want to know from you that as TGMM is getting so much recognition and it is and your character is getting so much praising and all. So do you wanna reconsider your uh, decision of not doing rom-com again? Mimosa, the thing is, I always feel, and I've said this before, that rom-com is a very young man's game. Of course, I have to try different genres and also the changing times with the film industry and the audience's taste. It all depends on the script, and very few filmmakers are writing good rom-coms. Good characters. But if somebody offers me a film which is age appropriate, where I can play my age, it could be a rom-com about a father also. You never know. But as of right now, there are many other genres that I want to try also. And like Yeah. I said earlier, I have done so many rom-coms now that I don't want to get really typecasted in only doing rom-coms. But like I said, never say never. As of right now, I was very happy with Tu Jhooti Mein Makar and the script and the character. Yes, But we are very happy too. Like you have. When you will sign a new movie? Kushali, I've been actually hearing a lot of scripts, but nothing has appealed to me. I am considering one film, but they still have to work out the logistics of that film. But post Animal, I don't think I'll start shooting till I think September, October. Also, because post pandemic and the way the films are faring nowadays, I think there is a little bit of a kind of a pause and a break that the film industry is going through, where they're trying to recalibrate the structure and the kind of films that are being made. So I think a lot of people are waiting and watching, but it's not that I was planning for a break, but now since I'm a father also, it'll be a good time away, to spend time with my daughter Raha. So I'm looking forward to that if nothing comes. But worst case scenario, I think I'll start shooting sometime end of the year, like October, November, December. Okay, yeah. And as you confirmed doing Kishore Kumar biopic, can we know when it will be started? Kushali, I want to do the Kishore Kumar biopic, but the script is still in the stage of writing. Anurag Basu has been writing it for quite some time. It's a very interesting idea. It's an amazing character to play, but there is still some time left for it. It's something which is very hard to crack a biopic. I did one on Sanju, and that kind of worked out well. But to crack a good biopic and make it entertaining is not an easy job. So I'm hoping that the writers crack it so I can be a part of it. न्यूज आ रही है सौरभ गांगुली के बारे में, जो बायोपिक आ रही है, हाँ जी, तो उसके बारे में सर क्या कहना है सर? वेल सौरभ गांगुली की बायोपिक अनाउंस हुई थी एंड आई थिंक सौरभ गांगुली ने खुद कहा था दैट ही वुड लाइक मी टू प्ले हिम ऑन स्क्रीन. बट जो सच बात यह है कि जो लोग बना रहे हैं फिल्म, उन्होंने अभी तक स्क्रिप्ट लिखी नहीं है. ओके, तो इट्स जस्ट अ रूमर. एंड बिकॉज मैंने किशोर कुमार की बायोपिक पे मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ टू बायोपिक्स एट द सेम टाइम. आई वांट टू प्ले अदर कैरेक्टर्स, एंड बायोपिक्स के लिए वक्त भी लगता है क्योंकि आपको उस कैरेक्टर के जैसे दिखना पड़ता है. So I think right now I'm just committed to Kishore Kumar biopic and not the Ganguly biopic. जी सर. आपकी और संगीतदार अपने जो प्रीतम जी है, आपकी और उनकी जोड़ी इतने अच्छी कैसे है? जी मतलब यार सच बोलूं वृषाल, तो आई गॉट लकी. आई थिंक एक एक्टर के करियर में गाने का बहुत बड़ा हिस्सा होता है टुवर्ड्स एन एक्टर इन हिज प्रोफेशन. एंड आई थिंक ये मेरी खुश नसीबी है कि प्रीतम के साथ मेरा जो सफर शुरू हुआ वो अजब प्रेम की गजब कहानी के साथ शुरू हुआ. मैंने उसके साथ 8 फिल्में की हैं. आई थिंक अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, ये जवानी है दीवानी, बर्फी, जग्गा जासूस, और क्या क्या था, ब्रह्मास्त्र, तू झूठी में मकार, और एक और फिल्म है जो मैं अभी भूल रहा हूँ. तो ये 8 फिल्में मेरे लिए बहुत लकी हुए. एंड ही सच वो इतना टैलेंटेड है, वो इतने अच्छे गाने देता है. एंड आई थिंक वो भी ये इस बात को पहचानता है कि मैं अपने गानों को लेकर बहुत मेहनत करता हूँ. मुझे अच्छा लगता है गाना परफॉर्म करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो ऑडियंस है जब वो फिल्म देखने आती है उनको भी पसंद है कि अच्छा गाना देखने को मिले एक फिल्म के जरिए. तो जैसे मैंने कहा था, ये मेरी खुश नसीबी है और मैं यही आपको वो परफेक्ट सूट भी होता है. जी जी. तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे जाके भी अच्छा म्यूजिक हो मेरे करियर में. हाँ, ये बात है. और एक फिल्म ही समझ नहीं आई. मेरे को याद है जब फिल्म रिलीज हुई थी तो बहुत लोग बोलते थे कि एंड क्या था, उनको समझ नहीं आया कि लड़की मर गई, वापस थोड़ा इट वाज वेरी, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल द फिल्म. बट आई थिंक अभी जब लोग फिल्म देखते हैं उनको बहुत पसंद आती है और मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे करियर में वो बहुत बहुत
स्पेशल फिल्म है, मुझे इम्तियाज के साथ मिलने का मौका मिला और कैरेक्टर भी कमाल का था, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू लाइक इट विशाल। चल रहा है प्रमोशन मार्केटिंग, अभी फिल्म रिलीज हो गई, अभी छुटकारा मार्केटिंग से, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप कहाँ से हो? मैं जाना, फ्रेंड्स को भी लेके जा, अच्छा है, मेरी फिल्म की कलेक्शन भी बढ़ेगी। हाँ फ्रेंड के साथ ही जा। आई एम गुड, आई एम टुडे वाज अ गुड फ्री डे सो फार, सो आई एम चिल्ड, डिड नथिंग, woke up late. How's Raha? Is just too amazing, she's too cute. Got all morning to play with her today. Oh, I have. What's your favorite movement during TJMM? My favorite, I would say all the family sections I really enjoyed. I don't know if you've seen the film, but I have seen that. okay. So I really felt that, that those section was very warm, to work with Dimple ji, Boni, uncle, and who played my dadi, my niece, my sister. That entire shoot, that schedule of my house ka set, that was a very nice schedule because I felt very close to my family. My family is also very similar. My family is very close. So I really enjoyed shooting that bit. Okay. Actually, 2 हफ्ते पहले मैं पंजाब में शूट कर रहा था आउटसाइड चंडीगढ़. इट वाज अ प्लेस, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन चंडीगढ़ से 2 घंटे दूर है. I think Faridkot maybe. नॉट फरीदकोट, नाबा नहीं, नाबा Yeah, Naba, Naba, नाबा, Okay. हाँ, Naba, Naba. नाबा में शूट कर रहे थे. वी वर शूटिंग इन अ हाउस, किसी का घर, एंड आई थिंक उधर सन ऑफ सरदार भी शूट हुई थी, दिलवाले दुल्हनिया शूट हुई थी. Yeah, yeah. 2 हफ्ते पहले उधर ही था. बेस्ट, लाइक सच अ नाइस फीलिंग टू बी इन पंजाब. Yes, I heard in an interview कि आपको अमृतसर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि आपने बचना है हसीनों की वहाँ पे शूटिंग की थी. And I feel so grateful कि मैं उसी सिटी से हूँ. And I have a question for you. If you could describe yourself in 3 words, what would it be? In 3 words. 3 words. Okay, I would say shy. I would say I can say handsome, most kind-hearted, down to earth. Neha, you'll say nice things only. Let me first say what I feel. So I'll say shy. I'll say lazy. I'm also very lazy. When I don't work, I can do nothing. I'm very happy doing nothing. And the third thing I would say is I am lazy, shy, and I am sporty. I love playing football, so sporty. Yeah, checked on any kind of fan pages of your on Instagram. Of course, I see RK Universe and whatever is there. Alia also follows a fan page which she shows me here and quite often. But I see all the support and the love I get, and I feel like I'm the luckiest person. Like even though I'm not on social media, I have so many people who help me and support me and love my work that I feel very grateful. I feel grateful every day. Did you start your career? At what age, Prathamesh? So I think career actually जब मैं छोटा था, मैंने एक फिल्म पर असिस्ट की थी, प्रेम ग्रंथ, जो मेरे चाचा फिल्म बना रहे थे. एक असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब था मेरा, जो मैं सेट पे था, मैं क्लैप मारता था. बट मैं बहुत छोटा था तो इतना समझ नहीं थी मुझे. लेकिन जब मैंने स्कूल खत्म की तो मेरे फादर एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे, आप लौट चले, तो मैं उसमें भी असिस्टेंट था. फिर मैंने कॉलेज खत्म किया, मैं अमेरिका से पढ़ाई कर कर जब मैं वापस आया, फिर मैंने संजय लीला बंसाली को ब्लैक, जो एक फिल्म बना रहे थे ब्लैक, उन पर मैंने असिस्ट किया 1.5 साल. एंड आई थिंक उस वक्त मैं 20 या 21 साल का था. तो मेरा ये मानना है कि मेरा करियर वहां से शुरू हुआ, बिकॉज जो भी मुझे सीख मिली, जो भी मैं फिल्मों के बारे में समझ आई, वो मुझे उस सेट से आई जब मैं ब्लैक पर काम कर रहा था. तो 20-21 साल से मैंने मेरा करियर शुरू किया. अगर आपको मराठी आती होगी तो फैंस के लिए मराठी में कुछ कह दो. यार अगर आती तो मैं मराठी हमेशा बोलता. मैं स्कूल में भी मराठी में मैं फेल हो गया था. मतलब मुझे तुझा नाव का है मुझे पता है, लेकिन अगर तू मुझे सिखाएगा मैं कुछ बोल सकता हूँ. तुझा नाव काय मतलब व्हाट हाँ, इज वो तो मुझे मालूम है, लेकिन कुछ और सिखा मराठी में. आप ही बता दो क्या सिखा दो. तू बोल. तो मतलब तू किसके लिए करना चाहता है, खुद के लिए कि किसके लिए? मैं ऐसे ही आपके मुंह से मतलब मराठी सुनना है मेरे को. अच्छा तो सिखा ना, कोई भी लाइन सिखा दे. एक फिल्म का लाइन कर ले चल. रिलेशनशिप्स में घुसना आसान है, उसमें से निकलना मुश्किल. मराठी में बोल. रिलेशनशिप मध्ये जायचं इझी आहे पण निघायचा एकदम कठीण आहे. अरे भाई आराम से. रिलेशनशिप रिलेशनशिप मध्ये मध्ये जायचा
जायसा. हा, जायचा खूप कठीण आहे. रिलेशनशिप मध्ये मध्ये जायसा खूप कठीण आहे. खूप कठीण आहे. आपण निघायचं खूप. सॉरी, मैं नर्वस हो गया. क्या प्रथमेश, तू खुद नहीं जा रहा. नहीं, मैं भूल गया आपको, मतलब बात. रिलेशनशिप में घुसना आसान है, हाँ. मराठी में कैसे बोलते हैं, उसमें से निकलना मुश्किल. उसमें से निकलना मुश्किल. रिलेशनशिप मध्ये घुसायचा इझी आहे, पण निघायचा हार्ड आहे, मुश्किल आहे. निकलना अवघड आहे, अवघड आहे. अवघड आहे. उगड़ है, उगड़ है. ठीक है. ओके ओके. सर कैसे हो आप? मैं बस सही हूँ. अभी फिल्म रिलीज हुई. अभी मेरे पास 10 दिन अभी छुट्टी है. थोड़ा ट्रेनिंग करूंगा. मैं बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. फिर मेरा एनिमल का शूट है, वो कुछ 20 दिन बाकी है, 20-25 दिन. तो उसके लिए अभी मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ. यस सर, मुझे आपसे एक सवाल है हाँ जी. कि आपने इतने अच्छे अच्छे मूवी बनाए, तो उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी मूवी है? मेरी फेवरेट, आई थिंक मेरे दिल के सबसे करीब है वेकअप सिड. वो मेरी तीसरी Yes. फिल्म थी. मुझे वो किरदार और वो जो कहानी थी मुझे बहुत पसंद आई थी. उसके अलावा आई थिंक बर्फी. बर्फी बर्फी. बर्फी की जो फीलिंग थी, वो फिल्म की फीलिंग. मुझे ऐसी फिल्में पसंद है, जो लोगों को खुश करती है, टच करती है, इमोशनल करती है. मुझे मुझे वो फिल्म देखने की फीलिंग बहुत अच्छी लगी. सर एक है ना, वो है ना आने वाली है ना मूवी, वो तो ना एनिमल, उसके बारे में बताइए आप. एनिमल एक्चुअली बहुत ही मेरी जिंदगी में बहुत ही एक ऐसी अलग कहानी है और कैरेक्टर है जो मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया. उसमें बहुत ग्रे शेड्स है. जब मैंने कहानी सुनी थी, मैं खुद डर गया था कि मैं कैसे प्ले करूंगा. लोग मुझे ये जो चॉकलेट बॉय या कमिंग ऑफ एज या रोमांटिक फिल्मों में ज्यादातर एक्सेप्ट करते हैं, बट ये जो किरदार था बहुत बहुत अलग था. बहुत इंटेंस है, बहुत ग्रे है, ग्रे शेड्स है. बट आई थिंक जो इसकी जो एक सोल है, वो एक फादर सन लव स्टोरी है. ओके. एंड मज़ा आ रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ऑडियंसेस ने मुझे इस दुनिया में एक्सेप्ट किया नहीं है. तो मुझे उस बात का डर है कि अगर वो करेंगे कि नहीं. बट बहुत मज़ेदार है. मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है संदीप वांगा के साथ काम करने में. उसने कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी बनाई थी. बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर है. ऑल्सो मस्ट टेल यू कि जब मैं छोटा था, जी. मैं भी बहुत स्टैमर करता था. जी, मैं जी. actually अभी भी जब कोई मुझे मेरा नाम पूछता था, तो मैं अपने नाम पर अटक जाता था. ओके. आई थिंक अभी भी थोड़ा बहुत होता है, बट यू शुड जस्ट ट्राई एंड बी वेरी बैलेंस्ड, ट्राई एंड मेडिटेट. जितना आप अपने आप को काम रखोगे, जितना आप कम सोचोगे इसके बारे में, बेटर होगा. जी. जी. कभी कभी इसके बारे में एम्बैरेस ना होना. जस्ट स्पीक नो, एंड नो सर, नेवर. थैंक यू सर. बाय. love you. I mean, when I was younger, when I was, doing songs like Badtameez Dil, I mean, in that phase, 10 years back, I used to kind of do it faster. So I used to like take 1 or 2 days of rehearsals. But as I'm getting older, my body is also getting heavier. So it is hard. But I've also come into the realization that, when you do songs, it's not really about the dance as much as you enjoy it while doing it. As long as you're enjoying the song, as long as you are expressing it fully, I think that's what the audiences really receive. It's not really about the step. So once I get the technicalities of the step, I don't really fuss too much about it. Then I just hear the song and I just sing loud and I just try and enjoy it while performing it. Nice. What's the best gift you've received from a fan? Best gift? Oh, I've received many best gifts. But since the time Raha is born, I've got so many gifts for her from from so many people that is really sweet. And the thing is, I'm using all of it, and it's so it comes in handy. And I feel like with me, all of them also have become parents, and they treat Raha like that. So I think that's the sweetest and the best gifts I've got. And then I watched TGM twice already because I love the film. It was really good. I mean, I tried to watch all your movies twice. The Brahmastra too. You obviously saw it in the theater, right? Yeah, obviously. Yeah, no, definitely. So in the scenes, there's one that you are so good at transitioning between the breakup artist and like you're playing Mickey as a lover. So there was a scene where your heart is broken and you're driving in Bedardia, and then she calls you
and you have to act as the breakup artist. So what's your secret to having those teary eyes and managing all those emotions? You're too amazing on screen. Thanks, Aaron. I think, nobody's asked me this question, and the honest truth is there is a manufacturing defect. If I keep my eyes are very sensitive, and if I keep my eyes open for like even 10 seconds, it automatically tears up. So that kind of helps me in emotional scenes. But the problem happens when you do romantic scenes or funny scenes, that even then my eyes are tearing up, So there's something wrong with my tear duct. It just keeps like pouring out. But I think that really helps me, and sometimes you are just so connected to the story at a certain time where the moment in the story works. So as an actor, you also kind of feel as just part of the character. It's just one of those rare things that just happens, and it happened at that moment. It was a very simple shoot. It was actually, we were in a studio and it was a green screen shoot where I was not really driving the car, but in the moment in the story, I think that was quite powerful. So that's why the moment works. What you think which is lacking in Bollywood and exciting in Mollywood? What's lacking? I think, I don't like to call them different industries. They're different languages and cultures, yes. But I think what's lacking in the Hindi film industry is really knowing your audience. I think somewhere in the last 10 or 15 or say 20 years, the Hindi film industry has been quite confused and influenced by Western culture, by Western films, by remakes, so there also, I guess, there are very few actors and actresses, and they're not giving new people an opportunity, like new directors, new minds. And I think it's very important actually to give them, because that's when the change happens. That's when new minds come, when new stories are being told. So I hope that happens. About the Kerala film industry, I think they're doing great. I think there is always great cinema coming from there. It's not just the masala cinema, but they have really good engaging stories. Always, and it's always been like that. So yeah, I think the entire Indian film industry, I think they're in a very interesting place, with films like Pushpa, RRR, KGF, now Pathan. Every industry is giving such solid commercial blockbusters and pushing each other to better each other. And I think that's something which is something very important which has happened, where all the industries, and especially the South industries, they have really come out on ahead. And I think that would really motivate and inspire each other. So it's a good time to be in the movies right now. So it's been your dream to direct a movie. So is there any plans for that? I think I have got an idea in the last pandemic. I got a very nice idea, but I'm not a good writer, so I have to start working with a writer. But I think now after Animal, because I'm going to have that 3-4 month, 5-month break, I think I'll start working on it. I think, yeah, I mean, I'm feeling it, I'm feeling like it might, you feel it inside that, you have a story to tell. I think I don't know if I want to direct myself. Maybe I'll cast another actor, because I know that once you're directing a film, it's a very hard job and you need all the support that you can. So I don't know if I'll be able to direct myself as an actor, though like my grandfather did it at the age of 21, so I was always inspired by that. But hopefully, I have a very nice story, a very heartwarming family story about parents and children. And I hope I get to make it soon. क्वेश्चन है, जब आपने जॉर्डन जो कैरेक्टर है रॉकस्टार में वो प्ले किया, तो जब आपने फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ी तो उस टाइम आप क्या सोच रहे थे? वो बहुत फनी कहानी है एक्चुअली। जब इम्तियाज मेरे पास आया, उसने मुझे कोई और पिक्चर ऑफर की थी, विच वाज समथिंग अबाउट मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मुझे याद है कि जब मैं एक्टर बनने से पहले ना, मैंने ये सुना था, उस टाइम जॉन इब्राहिम रॉकस्टार कर रहा था, तो वो फिल्म हुई नहीं, वो शेल हो गई उस वक्त, पता नहीं क्यों शेल हुई। तो जब मैं इम्तियाज से मिला, मैंने इम्तियाज को याद दिलाया कि आप एक फिल्म बना रहे थे रॉकस्टार, उसका क्या हुआ? तो ही सेड कि जिस आदमी ने रॉकस्टार की कहानी लिखी थी, उसे खुद डायरेक्ट और एक्टिंग करनी थी, तो उस वजह से उसने फिल्म नहीं बनाई। तो एनीवेज वी डिसाइडेड टू पार्ट वेज, एंड 3 महीने बाद उसने मुझे फोन किया और कहा कि आई स्पोक टू दैट गाय, so that's how Rockstar happened. But I reminded him, नहीं तो मेरे हाथ से भी निकल जाती।
सर वो कैरेक्टर को मैंने मेरी लाइफ में पॉजिटिवली बहुत अडॉप्ट किया है, और एक वो कैरेक्टर और एक वेकअप सीड वाला कैरेक्टर के जो भी सब वेकअप लाइफ में उसको जस्ट इग्नोर करना। वेकअप सीड वाला कैरेक्टर तो समझ सकता हूँ, लेकिन तूने रॉकस्टार वाला कैरेक्टर कैसे अडेप्ट किया? अरे सर मतलब क्या स्टोरी, जब मैं स्कूल में था तब एक कंपटीशन था तो वो कंपटीशन में सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको कोई यूनिक रोल प्ले करना चाहिए, तो मैं गिटार लेके और रॉकस्टार जैसा कॉस्ट्यूम पहन के स्टेज पे चढ़ गया था खाली 2 दिन की प्रिपरेशन में, और मुझे बहुत लोगों ने अप्रिसिएशन, आई गॉट सो मच अप्रिसिएशन। तुझे गिटार बजाने आता है? मैंने स्टार्ट किया था सर, आई एम नॉट फाइन बट आई प्ले। बहुत मुश्किल है भाई, मैंने भी रॉकस्टार सीखा था। और इफ यू आर नॉट म्यूजिकली इंक्लाइंड और यू आर नॉट बोर्न विद द गिफ्ट ऑफ म्यूजिक, बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है। बट आई विश मुझे पोजिंग नहीं आती। मैं भी जब पेपरजी के सामने खड़ा होता हूँ, मेरा ये पोज होता है, ये पोज होता है, या ये पोज होता है, हाँ सर, मुझे पता नहीं बोला मेरे था हाथ में अपने हाथ के साथ क्या करूँ, मुझे आइडिया नहीं है। तो व्हाट इज द राइट वे टू पोज? सर क्या ये तो ये कोरियन हार्ट है ना? यस सर। बट कोरियन इतना पॉपुलर कैसे हो गया हमारे हिंदुस्तान में? सर मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि आप फॉलो करते हो? आई मीन मैंने के-पॉप सुना है, मैंने कोरियन शोज देखे, जैसे मैंने स्क्विड गेम कोरियन शो है ना? यस सर। स्क्विड गेम देखा है, बट मैंने के ड्रामास देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना सुनता हूँ के ड्रामास के बारे में। बट इसके पीछे राज क्या है? लाइक हाउ कम इट्स बिकम सो पॉपुलर वर्ल्ड वाइड? उनका फैशन बहुत अच्छा है, स्टोरीज छोटी होती है, जल्दी मतलब अच्छा है उनका वे ऑफ टॉकिंग और सब। हिंदुस्तानी लोग हैं, हम उनसे मतलब रिलेट कर सकते हैं जिस तरीके से उन लोग सर रिलेट कर रहे हैं, तभी इंडिया में अब इतनी पॉपुलैरिटी है उनकी। हाँ वो भी सही बात है। आपने बीटीएस को सुना है सर कभी? हाँ बीटीएस तो कमाल है, लेकिन अगर तू कोई के ड्रामा शो रेकमेंड करेगी तो कौन सा करेगी? डिसेंडेंट्स ऑफ द सन सर। डिसेंडेंट्स ऑफ द सन? या सर, और बॉयज ऑफ फ्लावर। और ये नेटफ्लिक्स पे है, किस पर है? सर ये नेटफ्लिक्स पर भी है और नेटफ्लिक्स पर ऑलमोस्ट है। तो डिसेंडेंट्स ऑफ द सन एंड बॉयज ओवर फ्लावर। बॉयज ऑफ फ्लावर। सर जो उसका, सर आपकी नजर में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? मेरे नजर में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन योर लैंग्वेज। आई थिंक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज चॉइस, कि आप अपनी चॉइसेस बना सकते हो लाइफ में। फ्रीडम, यू नो, टू बी फ्री एंड to be original. I think if you have these 3 qualities, then you'll feel successful. अगर आप जॉब काम करते हो, अगर आप एक एम्प्लॉय हो, जो भी हो, I think it's very important for you to feel that you love your job and you feel something for it. You don't have to do it like a machine. You know, आप रोबोट नहीं बन जाओ। I think वो यस सर, वही ना, आजकल एक्टर सब है, आर्टिस्ट कोई है, और आप रिलेटिव आर्टिस्ट हो सर इस इंडस्ट्री में। ओटीटी मतलब आजकल लोग सीरीज में ज्यादा है, मूवीज से ज्यादा आई थिंक सीरीज में है। तो अगर आपके कोई मन में है कि आप कभी इन फ्यूचर कोई सीरीज का पार्ट बनोगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? Of course, I think as actors हमारे पास अभी एक नया प्लेटफॉर्म आया है जहां हम अच्छा काम कर सकते हैं। यू नो, अगर मैं कल रॉकेट सिंह या वेकअप सेट जैसी फिल्म साइन करूं, तो शायद वो थिएटर के लिए नहीं बनी है अभी। शायद लोग उसको चाहेंगे कि वो ओटीटी में देखें, क्योंकि वो ऐसी सब्जेक्ट्स है जो शायद ऑडियंस को थिएटर तक ना ले पाए। सो आई फील के ओटीटी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिलहाल मुझे कोई ऑफर हुआ नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि आजकल अगर मेरी फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यू नो, बहुत कम एक्टर्स की फिल्में थिएटर्स में रिलीज होती है और मैं उसको फॉर ग्रांटेड लेना नहीं चाहता। मेरी खुशनसीबी है। बट अगर कल अच्छा फिल्म ऑफर आया या ओटीटी का शो ऑफर आया, 100% आई डू इट। मैंने अभी फिलहाल फर्जी देखी। आपने देखी फर्जी? नहीं सर। अच्छी सर है। मैंने कल तो फर्जी मुझे पसंद आई, नाइट मैनेजर मुझे पसंद आई। फिर एक शो का नाम है कैट, जो नेटफ्लिक्स पर है, उसमें रणदीप हुडा है, वो भी कमाल का है। डेली क्राइम भी मुझे बहुत पसंद आई। तो आई थिंक इंडिया भी बहुत कमाल के एंड आई होप कि मुझे कुछ अच्छा ऑफर आए तो व्हेन आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। इवन मुझे शमशेरा भी बहुत पसंद आई सर। अगर तुम्हें शमशेरा पसंद आई है देन यू आर अ ब्लाइंड फैन। नो सर, शमशेरा में वो बात थी, लेकिन शमशेरा आजकल के लोग सर इतनी वो नहीं देखते, लेकिन मुझे उसका कंसेप्ट अच्छा लगा सर। अगर वो मे भी अगर वो 90s में आई होती तो वो सुपर डुपर हिट थी। लेकिन
शमशेरा की कहानी थोड़ी डेटेड थी ना, जैसे देखा हुआ है, ऐसा कुछ नयापन नहीं था उसमें, बट आई नहीं थिंक सर, द नहीं। लुक, द एक्टिंग सब अच्छा था सर, इवन म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। हाँ लेकिन चली नहीं ना कोमल, ऑडियंस किंग है, अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आया तो मतलब वो सही है ना, सर हमें पसंद आया ना सर। वो स्पेशल है ना। और भैया बताइए। बस चल रही है लाइफ, अभी ये खत्म करके मेरा कुछ एक मीट एंड ग्रीट है, फिर मेरा मार्केटिंग खत्म, गुड बाय जय माता दी, और फिर एक हफ्ता थोड़ा ट्रेनिंग करूंगा, फिर मैं जाऊंगा शूटिंग के लिए एनिमल की। बॉम्बे में शूटिंग है, फिर लंदन में शूटिंग है, फिर दिल्ली में शूटिंग है, फिर आई थिंक अप्रैल एंड तक मेरी फिल्म खत्म, और फिर अगस्त 11 को रिलीज। हु How's Raha? Oh, she's just amazing. What So to say? just You have what one thing you like people to remember about you? one thing that people should remember me, that I am a kind person. I want to be remembered as a kind person. I think वो सबसे जरूरी होता है. I hate Holi. I also lock myself in हाँ. house. नहीं, बचपन में I used to like enjoy, but then as I grew older, मेरे पास वो क्या बोलते हैं OCD. I started getting OCD, so मुझे रंग और कलर से थोड़ा परहेज होता है. So that's why I don't play. और मेरे दोस्त सब जंगली है, तो बस उन लोग जानते हैं कि मुझे पसंद नहीं, वो ज्यादा एक्स्ट्रा करते हैं, तो मैं भी आई लॉक माई सेल्फ, आई डोंट, अगर वो मेरे घर तक भी आते मैं उनको अंदर आने देता नहीं हूँ. Yeah. The most beautiful moment in your life right now is Raha's birth. Okay. हाँ करेक्ट, Apart बट from apart that, from that, yeah. beautiful moment, Messi World Cup. Messi World Cup, I know. You know it. Yeah. I mean, that's definitely climbing the ladder, but I've had a 40-year life, so I'm sure there must be some personal thing. I would say, I think the first time Mr. Sanjay Leela Bansali offered me Savarya, and I Savarya. heard the story, I thought, you know, it happens to everybody, right? Any dream that they have, that they want to do in their lives, and when you know that you get a good opportunity, I think that moment becomes very special, because it kind of is the window to your dream, you know. So that moment was very special to me. Is there any scene you want to see? You want to change in your movie? Any movie? A scene. Yeah. Any Uh, scene you wanted to change? I remember when I saw Rajniti the first time while I was dubbing, I felt the film was so good, but I felt I could have done better. So I would like to, you know, reshoot all those scenes and do a better job at it. But you are fabulous in this movie. हाँ, but क्योंकि फिल्म अच्छी थी, कैरेक्टर अच्छा था, तो निकल गया. But I felt I could do better in that film. So if I had the chance to go back and change something, I would like to change my performance in that film. I think any sort of thing could happen. Usually meet and greet happens because the film producer, when you're releasing a film, they have a lot of in-brand things, and they have a lot of contests, and usually happens there. But this thing that I'm doing today is probably the first time I'm doing it, and I'm going to do this at least 3 to 4 times a year, you know, where I will be in touch with all you guys as much as I can and interact as much as I can. But this is something that I want to do definitely as a tradition, and I want to do it as often as possible. And whenever you come to Bombay, you know, you can find out where I'm promoting or doing something, and or where I stay, and I would love to take a picture with you and meet you there. Yeah. An animal is so drastically different from the one in TJMM. What was the process going from one character to the other? How difficult was it to switch on and off that? You know, you're more alike with Mickey. So how different was it? Well, it was very difficult. Thankfully, I had 4 months. And you know what the hard part was? That the time I started shooting Animal, I also gave birth to Raha. And that was such a beautiful moment. But at the other side, I'm playing this dark character. So I used to be something else on set. And when I came home, I used to be something else. And that became very hard. You know, I became very confused about what was happening in my life. But it was very hard, very challenging. Thankfully, you know, Sandeep is somebody who really understands this world and character very well. I've worked very hard in getting a new character, you know, something like I've never done. We've got a great cast. And I just hope that people, you know, accept me, because it's really a very dark character, you know. So I don't know how. I mean, he's not. I'm not playing a psychopath or something. I'm not like. I'm playing. It's a father-son love story, but it's what a human being can go into. What lens in his mind to protect his family. You know, that's what the story is about. But it is dark. You know, so darkness is something which always scared me. But I hope, you know, audiences like it. Brahmastra, of course. If you had to choose one movie you would want to do a sequel of, which one would it be?
I think Ye Jawani Hai Diwani would make a good sequel. Also had a very nice story, I remember early, but then he went into this Brahmastra journey. But never say never, he might make it after a couple of years. I think, but it's We- obviously the story will be 10 years forward, where Bunny, Naina, Avi, and what was Kalki's character called? Naina and Bunny, Aditi. Adi and Adi and Aditi, where they are in their lives, I think it'll be quite interesting and nice to explore those characters. Yeah, we would We are love that. dying to see you. And also, we loved the reference to Ralia. Only it's Ranlia. It's Ranlia. Oh, so Ralia, okay. No, it's Ranlia. It's Ranlia, but it was really fun nonetheless. Acha, okay. I'll tell them. Maybe I can dub it or something. Thank you. Thank you, Ranveer. Let's really make this a tradition and try and talk as much as we can, not just during movie releases, but also during the year. But again, from the bottom of my heart, I want to thank you all the Thank you support so much. you have given me. It's something that I don't know how I'll ever pay this back, but thank you so much. Thank you, sir. This weekend, I got you. Bye.